गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइव स्ट्रीमिंग वाला आप लोगों को आवाज आ रही है कि एक बार फटाफट से बताएंगे? वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो लाइव स्ट्रीमिंग फटाफट से लाइव आएंगे, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। वी आर लाइव, सो फटाफट 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 से आ जाओ। कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू पीपल डूइंग? कैसे था कल? तो छुट्टी हो गई तुम्हारी, मजा हो गए तुम्हारे, मजे हो गए तुम्हारे। बट यस, आज अपने को वापस से कंटिन्यू करना है विद आवर सेशन एंड होपफुली द लास्ट सेशन ऑफ द राइटिंग प्रैक्टिस एज ऑफ नाउ। मतलब लास्ट प्रैक्टिस ही है तुम्हारा ये, क्योंकि चैप्टर 4 है। हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को देखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चंस को देखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में अपन लोगों ने 4 क्वेश्चंस को देखा हुआ है, और आगे के चैप्टर में 4th चैप्टर में 2 क्वेश्चंस देखे हुए हैं, आगे भी देखेंगे हम लोग। सो यस, लेट्स गेट रेडी टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन भी अपना हो गया, क्या बात है। Let's go to the 3 questions लिखे थे, so sorry. Let's go to the 4th question, that is deep learning and machine learning. What is the difference between deep learning and machine learning? So here it is. Let's go. Let's start with our today's session. And let's start with the answer. Given that deep learning and machine learning, deep learning and machine learning are frequently used interchangeably. It is important to note the distinction between the two. It is important to note the distinction between the two. As stated, deep learning and machine learning are subfields of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मेरे ख्याल से अगर अभी मैंने भी अगर यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट में एआई नहीं लिखा है, तो आप लोगों ने भी सिर्फ शॉर्टकट में एआई नहीं लिखना है, राइट? आप लोगों को भी पूरा सही तरीके से लिखना है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, अभी चेक करो, अभी चेक करो एक बार। एक बार चेक कर लो, क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से क्लियर है अभी, है ना? Now clear? Okay, let's go. Let's start. Nonetheless, deep learning is a subfield of machine learning. Deep learning is a subfield of
machine learning. So let's see what are the difference. The very first is न्यूरल नेटवर्क्स. याद है कि तुम लोगों को न्यूरल नेटवर्क्स कहाँ देखा है, ये वर्ड कहाँ देखा हुआ है, कोई बताएगा? अरे यार सो सॉरी. न्यूरल नेटवर्क्स कहाँ देखा हुआ है, कोई बताएगा क्या? न्यूरल नेटवर्क्स. वेरी 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 गुड. डेटा माइनिंग के अंदर देखा हुआ है, टेक्निक ऑफ डेटा माइनिंग. एंड हाई फाइव फ्रॉम योर to you people. I am very proud of you people and I don't know why but in अंदर से एक फीलिंग है भाई कि यार मेरे बच्चे भी पास होने वाले हैं. I don't know, I never get एकदम से फीलिंग इतनी नहीं आती बट बहुत अभी मेरे को नहीं पता आज जैसे फीलिंग आ गई कि यार तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो और अच्छे मार्क्स लाने वाले हो. तो बढ़िया है, बढ़िया है, वेरी गुड. न्यूरल नेटवर्क्स ट्रूली constitute deep learning, truly constitute deep learning. Deep in deep learning refers to a neural network with more than 3 layers which includes inputs and outputs and may be termed a deep learning method. May be termed a deep learning method. May be termed a deep learning method. अरे होंगे, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई करने का काम कर रहे हो तो तुम लोग डेफिनेटली क्लियर करेंगे. अगर मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो, अगर तुम खुद उसमें कोई चीटिंग कर रहे हो, अगर तुम लोगों को पता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो तो फिर भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. बट देन इफ यू नो from internally yourself that you are studying well, so you are going to definitely clear, that is for sure. Sorry. Second, deep learning and machine learning may be termed a deep learning method. Deep learning and machine learning differ in how their respective algorithm learn. Deep learning automates a significant portion of the feature extraction step reducing the need for manual human involvement and अरे अभी खाने की बात मत करो, भूख लग जाएंगी. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट नाउ. Involvement and enabling the usage of
bigger data sets. Usage of bigger data sets. Done? लिखा. Third, deep learning may be thought of as scalable machine learning. As scalable machine learning. Just a second, hold on. Classical or non-classical, classical or non-deep, classical or non-deep machine learning requires more human interaction to learn. Require more human interaction to learn. More human interaction to learn. Done, everyone? Next, fourth point. Deep machine learning can utilize labeled data sets also known as supervised learning. ये तो भाई मार्क कर लो तुम लोग यार एमसीक्यू के लिए, क्योंकि आगे जाके सुपरवाइज लर्निंग भी क्या होता है वो भी अपन एनी विच वेज देखने वाला है, बट ये चीज तुम लोग मार्क करके ले लो. To educate its algorithm, although a label data set is not required. A label data set is not required. It is capable of ingesting अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ये बच्चे पढ़ते नहीं है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने तुम लोगों को ये लिखवाया हुआ है. समझ में आई बात? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन इट्स रॉ फॉर्म and can automatically establish the hierarchy of characteristics, that differentiate certain data categories from one another.
from one another. And last point, it does not require human interaction to interpret data, unlike machine learning, allowing us to scale machine learning in more exciting ways. In more exciting ways. In more exciting ways. क्लियर एवरीवन? आर वी डन एवरीवन? एक बार फटाफट से बताएंगे क्लियर है क्या अपना, हो गया क्या अपना? चलो फटाफट से बताओ। तो यहाँ पे अपना और एक ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। अगर देखो अब क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली तुम लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी बिकॉज इट इज सेम लाइक जो तुम लोग एसएम में भी करने वाले हो, राइट? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज सेम। कुछ क्वेश्चंस अभी और एक दो क्वेश्चंस अपन लोग लिखेंगे आज के सेशन में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जो आप लोगों को खुद होके पढ़ना पड़ेगा, मतलब खुद होके लिखना पड़ेगा। उसका भी बहुत जल्दी मैं आप लोगों को वीडियो भेज दूंगी या बता दूंगी कि कैसे लिखना है, क्या कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को वापस से प्रैक्टिस करने हैं। अदर देन दिस राइटिंग प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है? हाँ, नो डाउट दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बट यस इसमें थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी है जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ने का काम नहीं कर रहे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस इसमें यू नो लेने का काम किया हुआ है मैंने। तो लेट्स गो एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले दैट इज अप्रोचेस ऑफ मशीन लर्निंग। ये भी एक क्वेश्चन है जो बच्चे कभी भी करके नहीं जाते हैं जस्ट बिकॉज डोंट नो व्हाई। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा आंसर है, या लर्न करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, इसीलिए बच्चे ये बिल्कुल भी करके नहीं जाते हैं। एंड आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू डू दैट। मतलब सब करके जाएंगे और एक हाथ छोड़ेंगे और एक हाथ छोड़ने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, जो मेरे को नहीं चाहिए बेसिकली। इसीलिए मैं चाहूंगी कि तुम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो लेट्स गो टू द अप्रोचेस ऑफ मशीन लर्निंग। हेडिंग देंगे ऑन द बेसिस ऑफ the type of signal or feedback provided to the learning system machine learning systems are generally categorized into 5 major categories. 5 major categories. The very first is supervised learning. The very first is supervised learning. Its algorithm construct a mathematical
model of a data set that includes both the inputs and expected outcomes includes both the inputs and expected outcomes. The data consists of a collection of training examples and is known as training data and is known as training data. ठीक है, डन. नेक्स्ट इसी के अंदर it is claimed that an algorithm has learned to do a task if it improves its outputs or predictions over time. Active learning, classification, active learning, oh shit, classification, एक सेकेंड, active learning, classification and regression are examples of supervised learning. Are examples of supervised learning. Are example of supervised learning. Classification algorithm are used when the outputs are limited to a certain set of values, whereas regression techniques are used when the output may take on any value within a given range.
any value within a given range. So this is all about your supervised learning topic. I know थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन yes अपने को करना है, अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है. तुम्हारा काम रहेगा कि तुम लोग इसको पढ़ के जाएंगे, मैं तुमको बता रही हूँ, राइट? कभी पूछा नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. हुआ? Its approaches utilize a data set comprising just inputs to identifying data structure, such as grouping and clustering, such as grouping and clustering. Therefore, the algorithm are taught using unlabeled, unclassified, and uncategorized test data. Uncategorized test data. उसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, क्लस्टर एनालिसिस is the process of assigning a set of data to subsets called clusters so that observations within the same cluster are similar based on one or more preset criteria while observations obtained from other clusters are different. तो ये था तुम्हारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. थर्ड आएगा सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग. गौरांश, आप या तो क्लास के नंबर पे कॉल कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो, बट नॉट नाउ, एज ऑफ नाउ. दोपहर में आप कॉल कर लो,
तो हम लोग आपसे पर्सनली बात कर लेंगे, टेंशन मत लो आप। आपको स्क्रोलर दिखता रहेगा ना यहाँ पे, तो आप उस पर वो नंबर पे कॉल कर लेना। मे बी अगर आपको मेरे से बात करनी है तो 2 बजे के बाद आप कॉल कर लेना, मैं आपसे बात कर लूंगी, ठीक है। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग एंड फॉर सीएमए फाउंडेशन। अगर आपका ऐसा कंसर्न है तो आराम से आपका हो जाएगा। आप जिस इसमें हो, ग्रुप 2 के इंटर में लेक्चर में हो, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ सक्सेस बैच देख के क्लियर करा हुआ है। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सक्सेस बैच देखा हुआ है ना। वृंदा मेहता एक है इसमें से, मेरे को वृंदा याद है, संजू याद है। इन्होंने भी सक्सेस बैच देख के क्लियर करने का काम करा हुआ है, बट देवर रेगुलर विथ ऑल द थिंग्स, तो आपको वो करना पड़ेगा। हाँ, शायद यशिका भी, हाँ। यहाँ पे चैट बॉक्स में ही काफी ऐसे आपको बच्चे मिलेंगे जो मतलब क्लियर करे हुए सक्सेस बैच से ही। परी तो हमारी पेड बैच थी, जितना मेरे को यहाँ से पेड बैच की स्टूडेंट थी परी तो। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग। हाँ, दीपक भी है ना, यस। सो यू कैन, बट देन यू हैव टू बी अटेंटिव ऑल द टाइम, है ना। या बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टूडेंट्स, वो याद रखना। इंटर स्टूडेंट्स, नो नो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। अगर आपने पहले पढ़ा रहेगा तो ये आपका होगा। इट इज एन इंटरमीडिएट। मेरे पास कौन सी डिग्री है, क्या ही कर लोगे उसी के साथ साथ। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग विद कंप्लीटली लेबल ट्रेनिंग डेटा एंड अनसुपरवाइज लर्निंग विदाउट लेबल्ड। कोई गलत नहीं हो रहा है इंटर के साथ, बेशर्मो, तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़, ये सिर्फ लिख के तुम्हारा हो जाएगा क्या? ये तुम तब लिख पा रहे हो जब तुम, नहीं नहीं, मैं सीए नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सीए। एक ए भाई, लाइव स्ट्रीमिंग वालों, तुम लोग भटको मत, तुम लोग भटको मत, तुम लोग इधर आओ। विदाउट लेबल ट्रेनिंग डेटा, भटको मत, कोई अन्याय वन्याय नहीं है, चुप बैठो। Many machine learning researchers have discovered that when unlabeled data is combined with a tiny quantity of labeled data, there is a significant, कौन फैला रहा है ये अफवाह, gain in learning accuracy, in learning accuracy। और यहाँ पे अपना ये थर्ड पॉइंट भी हो जाता है खत्म। फोर्थ पॉइंट, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तुम लोगों को एमसीक्यू में भाई आ सकता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब क्या होता है, ये तुम लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है। ध्यान से करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, चलो आ जाओ। इट इज अ subfield of ML, that is machine learning, concerned with determining
how software agents should operate in a given environment so as to maximize a certain concept of cumulative reward of cumulative reward of cumulative reward. The environment is generally represented as a Markov decision process in ML. Cumulative reward. Reinforcement learning technique do not need prior knowledge. क्या बात है? Do not need prior knowledge of an accurate, समझे क्या तुम लोगों को? इसके लिए किसकी जरूरत नहीं है? accurate mathematical model की. Mathematical model of MDP and are employed when exact models or represented, just a second रुको, represented as a Markov, Markov decision process in ML. Reinforcement learning technique does not need prior knowledge of an accurate mathematical model of MDP and are employed when exact models are not practicable. Done. And the very last fifth point is dimensionality reductions. It is a process of acquiring a set of major variables in order to reduce the number of random variables under consideration. Environment generally represented as a Markov decision. अभी तो बोला मेरी माँ. Principal components analysis is a well-known technique for dimensionality reduction
इट इन्वॉल्व्स, इट मतलब कौन, पीसीए, इट मतलब कौन, पीसीए, पीसीए मतलब कौन भाई, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स, सॉरी इट इंक्लूड्स transforming data with more dimensions to a smaller space, with more dimensions to a smaller space. डन। तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन क्या हो जाता है गाइस, खत्म हो जाता है। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। एक बार फटाफट से बताएंगे आप लोगों को क्लियर हो गया है क्या? आर वी डन विद इट, आर वी क्लियर विद इट? चलो लाइव स्ट्रीमिंग जल्दी जल्दी बताने का काम करेंगे। तो यहाँ पे अपन लोगों ने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? लेट्स गो, जाएंगे आगे विद द 6th क्वेश्चन। 6th question, let's go आगे with the 6th question. What do you mean by predictive analytics? What do you mean by predictive analytics? Predictive analytics मतलब क्या? चलो लिखेंगे, let's start. Predictive analytics, as implied by its name, focuses on forecasting and understanding what might occur in future, whereas descriptive analytics focuses on previous data. Focuses on previous data. अरे यार हाँ, focuses on previous data by analyzing past data patterns and trends by examining historical data and customer insights it is possible to predict what may occur in the future. What may occur
in the future. Next. How does predictive analytics work? How does it work? The foundation of predictive analytics is probability. Using techniques such as data mining, statistical modeling, वही मैं सोचूं अभी तक परी ने जवाब कैसे नहीं दिया. Mathematical relationships, between variable to predict outcome. An ML algorithm, जिसमें क्या क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा, रेग्रेशन होगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने अभी थोड़ा टाइम पहले ही देखा हुआ है. रेग्रेशन एंड क्लस्टरिंग टेक्निक्स. पढ़ने के लिए नहीं आई, लेकिन मिलने के लिए आ जाना. उसमें क्या है, मिलने के लिए तो किसी दिन आ ही जाएंगे, वो तो तुम कर ही सकते हो. उतना तो कष्ट कर सकते हो यार. चलो. And predictive analysis attempts to predict possible future outcomes and the probability of those events. To create predictions, ML algorithms, for instance, utilize current data and make the feasible assumptions to fill in missing data. To fill in missing data. डन है लाइव स्ट्रीमिंग. तो यहाँ पे अपन लोगों का और एक क्वेश्चन हो गया. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 ओवर योर. अब तुम्हारा एक होमवर्क रहेगा. इसी क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों को प्रेडिक्टिव एनालिसिस के क्या लिखने हैं. यू हैव टू राइट द होमवर्क. क्या होमवर्क रहने वाला है तुम्हारा यहाँ पे? दैट इज एडवांटेजेस एंड
disadvantages of predictive analysis, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ये तुम लोगों को लिखना है, याद से लिखना इसका ये टॉपिक, नहीं तो तुम भूल जाएंगे, और अगर तुम भूल गए तो तुम्हारा स्वाहा हो जाएगा और तुम लोगों को समझेगा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फटाफट से, एक लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का लिखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड अप विद दी राइटिंग प्रैक्टिस सेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। बेसिकली चारों चैप्टर्स को लेके अपना हो गया है। एज आई टोल्ड यू, बहुत जल्दी मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं वापस से देने वाली हूँ तुम लोगों को, तो वो हम लोगों को अच्छी तरीके से करके लेना है, और उसी के साथ साथ आप लोगों को अपडेटेड रहना है आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, एंड ऑल्सो द व्हाट्सएप ग्रुप विच यू आर इन एडेड, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो जैसे जैसे आएंगी वो वहां पे अपडेट होती जाएंगी, राइट। तो अगर मैं एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद बाय बाय है, अभी नहीं है, रुको जरा, नहीं तो मस्त भाग के चले जाएंगे। अभी के लिए एक बार मैं वापस से सम अप करना चाहूंगी विद द थिंग्स। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा। चैप्टर 1 के अपन लोगों ने 5 क्वेश्चंस देखे हैं, बराबर है कि नहीं है। चैप्टर 2 के भी 5 क्वेश्चंस हुए हैं अपने। चैप्टर 3 के मात्र 4 क्वेश्चंस हुए हैं, एंड चैप्टर 4 के मैंने लिए हुए 7 क्वेश्चंस। ऐसे करके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं तुम्हारे? टोटल मिला के 21 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हुए, प्लस एज ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर एंड नाउ ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, तो आप लोगों को उसके लिए वापस से बोल रही हूँ, अपडेटेड रहना पड़ेगा, ये एक चीज मेक श्योर करनी है। वी हैव कंप्लीटेड दिस इन आवर 6 डेज। आज 6th सेशन है मेरे ख्याल से, यस आज हमारा 6th सेशन है, और हमने ये 6 सेशंस में मिला के 21 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का काम किया हुआ है। सो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको कंप्लीट करने का काम किया हुआ है। तुम लोगों को अगर इमेजिन होता रहेगा, अगर बिलीव होता रहेगा, तो यस गाइज वी हैव डन इट, एंड होपफुली आप लोगों को, वो बाद में बोलूंगी अभी तो नहीं, बट यस लेट्स गो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 7th क्वेश्चन अपना रहने वाला है। व्हाट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड स्टेट its advantages and disadvantages. State its advantages and disadvantages. और बेशर्मो इतने दिन कमेंट नहीं किया, तो एटलीस्ट ये लास्ट लेक्चर है तुम्हारा 4th चैप्टर का, तो एटलीस्ट आज तो कमेंट कर देना कि कैसा गया तुम्हारे 6 दिन का पूरा सेशन। इतने तो बुरे मत बनो, हो पता है मेरे को, बट फिर भी। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स डिस्क्राइब्स, पूछा प्रिस्क्रिप्टिव का है, लेकिन शुरुआत कहां से करती है ये आंसर की? परी तेरे को तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे को उड़ा दूंगी। तेरे को क्या लगता है मैं भूल गई क्या? तेरे को कितना परेशान किया है तूने मेरे को। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स डिस्क्राइब, what has occurred, diagnostic analytics explore, why it occurred, predictive analytics describe, what could occur, and prescriptive analytics describe what should be done. What should be done. This approach is 4th, final, and most sophisticated
step of the business analysis process. Done? Advantages and disadvantages. Advantages and disadvantages. When utilized correctly, prescriptive analytics gives important insight, for making the most optimal data driven decisions, to optimize corporate performance. Nonetheless, similar to predictive analytics, this technique requires enormous volumes of data to deliver effective findings. Which is not always the case. Done. Examples of prescriptive analytics. GPS technology is a frequent prescriptive enormous volumes of data. Enormous volumes of data. लिखा हुआ क्या? हुआ? ठीक है, चल. GPS technology is a frequent prescriptive analytics tool since it gives recommended routes to the user's intended destination
based on factors such as travel time, and road closures. And road closures. In this scenario, it optimizes a goal that analyzes the distance between your origin and destination. And prescribes the ideal path with least distance. With least distance. Further, applications include further application includes the very first oil and manufacturing, oil and manufacturing, that is monitoring price fluctuations, monitoring price fluctuations. Second, manufacturing, enhancing equipment administration, administration, maintenance, cost modeling, production and storage. Cost modeling, production and storage. And storage. Next, healthcare, enhancing patient care. Oh, so sorry. Enhancing patient care and healthcare administration by analyzing readmission rates and cost effectiveness of operations
and cost effectiveness of operations. Next is insurance. Evaluating customer risk. In terms of price and premium information. Price and premium information. And the very last is pharmaceutical research. Determining the optimal testing methods and patient populations for clinical trials. And yes, here we are done with the chapter as well. हमारा यहाँ पे 4th chapter भी end होता है. वापस से बता रही हूँ, we have done with the 4 chapters. Chapter 1 में 5 questions, chapter 2 5 questions, chapter 3 4 questions and chapter 4 7 questions हम लोगों ने करे हुए हैं. एंड वापस से मैं आपको सेम चीज बता रही हूँ, कोर्स के अंदर आप अपडेटेड रहेंगे क्योंकि फिर फ्री कोर्स है, 1 रुपीज ही सिर्फ पे करना है, वो भी एक चार्ज है इसलिए. तो जो आपके पास जो S8 का आप लोगों का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF भी डालने वाली हूँ, तो उसको भी ध्यान से देखने का काम करेंगे. सो यस, वी आर डन विद ऑल द 4 चैप्टर्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स. बस स्टे अपडेटेड टू द यूट्यूब चैनल क्योंकि बहुत सारी चीजें नई नई आप लोगों के लिए एज प्रॉमिस्ड आने वाली है और अपने को हमारा ये जो एग्जाम है वो क्लियर करना है. सो यस, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम AEC. बाय बाय, टेक केयर. आप लोगों का थोड़े टाइम में SM का लेक्चर रहेगा. सो यस, लॉट्स ऑफ लव, सी यू ऑल, बाय बाय, कीप स्टडिंग, टाटा.